Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. In the previous slide or lecture, we defined soil. Now this lecture is related how soil is formed from rocks. Rocks are the parent material, so let's see how rocks slowly and gradually changes to soil. This is again, this slide means this lecture is all for all BSMS MPhil students of botany, zoology, chemistry, even biotechnology, soil microbiology, geography, who can have botany as a subject or soil as a subject. So let's see. Rocks are the parent material, as I said in the previous talk. Rocks are the parent material. These are the rocks which are broken down, weathered, and ultimately give rise to a material, weathered part, which we define as a soil. So rocks are the natural aggregates of one or more mineral forming the solid part of the earth. Aggregation of many minerals. They are not generally composed of single material, but rarely maybe one material is there, but more commonly it's a mixture, the aggregation of many minerals. Rate and extent of weathering depends upon type of rock, mineral composition, and the climate. The rate and extent of material. It is related depending upon the rock, different types of rocks, mineral composition, what minerals are present in the rock, and climatic conditions of the area. Simple rocks are more resistant than complex rock. Simple rocks, we say, which have fewer elements, and complex, which have complex material, more minerals. Let's say 20-30 minerals are present, so they are complex one. Rocks are of three major types. Igneous rocks, which share almost 64.7% of the earth crust. They are formed by the solidification of molten lava called magma, granite, anorthosite, diorites. These are the examples. Composed of primary minerals, quartz, feldspars, dark colored minerals as biotite, agatite, hornblende, gabbro, basalt. So these consist of primary minerals. Sedimentary rocks, they share 7.9% of the earth crust. They are formed due to deposition and re-cementation of weathered material of other rocks. Granite is formed from, such as granite is formed from quartz. Sand changes to sandstone, which then converts to quartzites. Clay changes to shale. Calcites change to carbonates, lime, dolomite, conglomerates. Third type of rocks are metamorphic rocks. They share 27.4% of the earth crust. Igneous and sedimentary rocks undergo metamorphism. They show metamorphosis under tremendous pressure and high temperature. Atmospheric pressure, physical pressure, and high temperature. So they change suddenly from one kind to another kind, and these changes occur from the igneous and sedimentary rocks. Thus, igneous rocks change to gneiss, schist, sedimentary rocks of sandstone change to quartzites, shale changes to slate, phyllite, limestone changes into marble. These are some of the rocks.
सॉयल वेदरिंग, तोड़ फोड़, रॉक्स की तोड़ फोड़ को हम वेदरिंग कहते हैं. Weathering of parent material, whenever we use the word weathering material, that would mean rocks. Weathering of parent material on geological time scale creates, produces, forms soil. Geological times, millions of years, not our lifetime कि जी 100 years हैं इतने years हैं, no, million of years have taken through a continuous process of weathering, which ultimately has given what we see today in the form of the soil. Weathering is disintegration and decomposition of rocks. This is disintegration, therefore decomposition, that is finer segmentation occurs, and minerals to more stable forms under definite set of environment. This says to more stable form. That means if they change to sand, they change to clay, they cannot be further modified, cannot be further disintegrated under a particular set of environment. It is a simultaneously constructive process as synthesis may take place. So, on the one hand, there is a disintegration, and simultaneously at the same time, synthesis is going on. The soil is synthesized, it is carried out, transported uh, from one place to another place, it is going on. Weathering is a continuous process which does not stop even after formation of soil. Soil बनने के बाद भी this process in nature is continuous. Three major types of weathering process are there. Three major types, groups of processes are there. Physical weathering, चूँकि फिजिकल तोड़ फोड़ होती है, इस तरह समझ लें कि जो सड़क पे बैठे होते हैं पत्थर तोड़ रहे होते हैं, ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ को तोड़ते हैं या किसी और वजह से हम पत्थर को तोड़ते हैं, वी आर डिसइंटीग्रेटिंग इट. दूसरा प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग, इन विच rocks or smaller fragments, they are decomposed, decayed, broken slowly down into small chemical changes occur. And then biological weathering hai. Biological weathering means in which organism is playing the role. Man is playing the role, plants is playing the role, roots are playing the role, or certain animals, burrowing animals are playing the role, or even bacteria, microbes, they can play the roles. We consider the first method, group of weathering, physical weathering or disintegration. I have said why we are saying it disintegration, because we are causing disintegration, tore breakdown of the rocky material. Physical or mechanical weathering or disintegration is the process whereby rocks and minerals are cracked, crushed, smoothed by physical natural forces. The forces responsible for physical weathering are overburden pressure, shear stress, grinding pressures under ice sheet, wind, expansion forces due to temperature and वाटर प्रेशर. अब आप देखें कि टेम्परेचर में, विंड में, वाटर में कौन सा प्रेशर है जो कि पहाड़ को तोड़ देता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, this process, which is by physical means, is disintegration, as only physical breakdown of material is involved. I would give you example simply. If you have moved around certain air or stones are changed into smaller pieces, crushing machines are there. These crushing machines are not causing decomposition, rather they are causing breakdown, physical breakdown, disintegration. They are doing disintegration, तोड़ फोड़ कर रहे हैं. पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर्स को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, हमारे लिए चिप्स बना रहे हैं, क्रश बना रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल. तो
तो ये वेदर प्रोडक्ट डू नॉट चेंज केमिकली. Disintegration, physical change is there, but no chemical change is there. There is a continuous physical decrease in the size of the particles from larger to smaller. अब कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कुदरती मसाइल हैं जो कि फिज़िकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं. टेम्परेचर देख लें, फ्रॉस्ट एक्शन देख लें, ऑर्गेनिक एक्टिविटी देख लें, ग्रेविटी देख लें, एब्रेजन देख लें, सॉल्ट एक्शन देख लें. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रॉक तोड़ फोड़ के दे कर सकते हैं. टेम्परेचर ले लेते हैं. रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. ईच मिनरल हैज़ इट्स ओन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन. क्योंकि रॉक सिंपल किसी एक मिनरल से नहीं बनी होती, मुख्तलिफ मिनरल हैं. ईच मिनरल, वो जो कंपोनेंट मिनरल है, कंपोज मिनरल्स हैं, they have their own behavior towards high and low temperature. Their response to temperature is differential. The differential stress due to diurnal or seasonal changes in temperature creates rifts and cracks in the rocks. इसकी मिसाल इसी तरह है कि मसलन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक आध दो स्टूडेंट उनको आप आराम से बिठा के मना सकते हैं, सुना सकते हैं. लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो, मास हो, मॉब हो, तो उसमें आप देखें कि यू कैन नॉट कीप दैम टुगेदर बिकॉज ईच स्टूडेंट को आप समझें कि वो मिनरल है. ईच मिनरल और ईच स्टूडेंट हैज़ हिज ओन कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब, टू लिसन, टू एग्री और टू डिसएग्री. व्हेन ना इत्तेफाकी जब हो जाती है तो बिछड़ जाते हैं सब लोग. इसी तरह जो रॉक्स हैं उनकी जो मिनरल्स हैं, इफ़ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रॉक्स, इफ़ इट हैज़ मोर मिनरल्स एंड temperature is there, diurnal temperature, seasonal temperature, that causes cooling and heating. This differential cooling and heating causes separation of the rock. Differential expansion due to heating, shrinkage upon cooling are very important weathering processes, especially in heterogeneously composed rocks. Heterogeneously composed rocks का मतलब है कि those rocks which are composed of many minerals. Again, I would say each component mineral has its own capability to expand, to contract in response to changing temperature, especially in the deserts and a high altitude. Differential expansion and contraction rocks are heated during daytime and cooled at night below the air temperature due to the loss of heat. This differential heating and cooling promotes mechanical weathering. ऊपर से राख गर्म हो जाती है, अभी नीचे ऊपर से गर्म हो जाती है दिन को, रात को ठंडी हो जाती है. दिस ऑल्टरनेट हीटिंग वेटिंग जो है, और लॉस ऑफ हीट इज स्लो एट नाइट और gain is very high during daytime. Because of this differential behavior, the coordination between the different minerals or coordination between the upper layer and lower layer is not there, or underneath layer is not there. So cracking occurs. Wide or sudden diurnal fluctuation in surface causes disintegration of some rocks. That is wide and sudden. अगर आप पत्थर को गर्म कर दें, हीट में रखते हैं, चूल्हे में रखते हैं, ज़रा ट्राई करें लेकिन दूर बैठ के करें, तो आप देखें कि वो पत्थर थोड़ी देर बाद क्रैकिंग आवाज़ के साथ टूट फूट जाएगा. Parent material with complex mineralogical structure is more susceptible or easily disintegrated due to changes in temperature than rocks with a simple mineral composition. Greater the mineral complexity, greater would be the variation coefficient of expansion
and contraction, therefore higher will be the disintegration rocks. इसकी एग्जांपल आप इसी तरह ले लें कि कोई भी एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतने ज़्यादा उनके ख्यालात होंगे, ख्यालात आपस में नहीं मिलेंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई इस तरफ चला जाएगा, कोई उस तरफ चला जाएगा। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स मिनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं उसमें मिनरल जो हैं हम तो देख नहीं सकते, लेकिन दोज मिनरल्स आयरन है, कैल्शियम है, फास्फेट है, जो भी है वो आप देख लें कि हर एक का अपना बिहेवियर होगा, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होगी, हर एक का रेंज ऑफ टॉलरेंस होगा टुवर्ड्स द हीट लॉस एंड हीट गेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस differential gain and loss they break up. To give you a simple example, layman example, कि why poor quality glasses are broken apart. आपने देखा होगा घरों में सस्ता गिलास आप खरीदें, चाय का कप खरीदें, गर्म पानी डालें, ठंडा पानी डालें, डेट वुड क्रैक, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि जो सस्ते गिलास हैं दे आर मेड ऑफ इम्प्योर सैंड, ये सैंड से बनते हैं और सिलिका से बनते हैं, सिलिकॉन, तो इम्प्योर होंगे, जब इम्प्योर होंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन जो गिलास कीमती होते हैं, जिस तरह हम एक ग्लास वेयर आप देखें ओवन में रखते हैं, हम नहीं टूटते हैं, बिकॉज दे आर हाई क्वालिटी ग्लास, दे आर मेड ऑफ वन मिनरल। इसी तरह ग्लास को हम ओवन में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब्स को ओवन में रखते हैं, पैटी डिशेस को ओवन में रखते हैं, दे डू नॉट ब्रेक। लेकिन इसी को अगर चाहे वो लो क्वालिटी हो या हाई क्वालिटी हो, अगर आप सडनली गर्म गिलास के ऊपर पानी डाल देंगे, ओवन से निकाल के प्लेट को पानी डालेंगे तो वो टूट जाएगी, बिकॉज सडन चेंज आर इनटॉलरेबल। लेकिन यहाँ पे वी आर थिंकिंग ऑफ मिनोलॉजिकल, सो पुअर कप्स, पुअर और चीप प्राइस कप्स या ग्लासेस, दे आर मेड ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल, या दे हैव मल्टीपल मिनरल्स इन दैम। वो मल्टीपल मिनरल जो हैं दे आर काजिंग द डिफिकल्टी। सो अगेन ए डिफरेंशियल स्ट्रेस इज क्रिएटेड एंड इट गेट्स ब्रोकन। लेकिन जो आला क्वालिटी के गिलास होते हैं they are generally made of pure sand, silica. They have one kind of sand or say one mineral which do not produce a differential force on the inner or outer side. Therefore, they do not break. तो घर में आप ट्राई कर लें, गिलास ले लें, लेकिन कोशिश करें कि वालदा ना हो, मार ना पड़ जाए। एक्सफोलिएशन और पीलिंग ऑफ, दिस इज अनदर way where rocks they peel off. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जी कि upper surfaces they become warmer earlier and they become more warmer than the lower layers. Upper layer, lower layers. Daytime में they become warmer. Night time में they lose heat. Upper surface loses heat quickly. आप देखिए कि now there are two heat strata. Daytime, upper layer is warmer, lower is cooler. During the night, upper is cooler और lower is warmer. अब ये जो upper और layer दोनों में फ़र्क है टेम्परेचर में, तो definitely the one which is warmer that would expand. The one which is cooler that would contract. This differential contraction, expansion, warming, cooling, it peels off the upper surface. आपने कभी देखा होगा पहाड़ों के ऊपर, if you go there, the upper sometime the rocky upper surface has broken layer still lying there. Cracks are there, but if you touch them, move them, they can be moved. This is peeling और exfoliation कहते हैं इसको। ये आप देखें एक तस्वीर है, आप देखें कि इस पे आपको कोई ब्रोकन लेयर्स नहीं नज़र आ रही,
बड़ी नीट एंड क्लीन सरफेस है. This picture of the half dome, the rock is peeling away from the mountain in the layers just like an onion. This is called exfoliation. ऊपर से जो क्रैक लेयर है वो चली गई है, गिर गई है. और थैंक यू वेरी मच.